हेलो हेलो हेलो। तो क्या वो लाइव हो चुके हैं? एक बार चेक कर लो यार। फोन में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या लाइव है क्या नहीं। ओके सब परफेक्ट। देख लेना एक बार। हेलो हेलो चेक चेक। आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज बढ़िया है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? क्लियर है? माइक चेक माइक चेक। 1 2 3। आवाज क्लियर है? जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। इसलिए आवाज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले स्ट्रीम में देख रहा था तो आवाज बहुत खराब थी। अच्छा, तो आवाज से सेट है। तो मैं पहले अपना प्रोजेक्ट बना रहा था। इसमें आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। और काम किया। मेरा कॉन्टेंट एग्रीगेटर। ये थोड़ा टाइम लगता है करने में। मैं कॉलेज का पीपीटी फेसबुक का। ये है मेरा पीपीटी मेरे कॉलेज का। प्रोजेक्ट सेम है। ऐसा कुछ देखने में फाइनल प्रोजेक्ट। और ये मैन है। ये मैंने जिसका प्रोजेक्ट कॉपी किया हुआ है। और बाकी सब पीपीटी पीपीटी कॉलेज का सब अपना। ये तो अपने टाइम लगता है। हम्म, 2 मिनट। दो मिनट में कुछ काम आ गया अभी। मैं अपना ही लाइव बना के छोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई ऑनलाइन है तो मुझे पता चले। लाइक्स रजिस्टर व्यूअर फ्लूएड। कुछ काम आ गया अभी। मैं अपना ही लाइव बना के छोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई ऑनलाइन है तो मुझे पता चले। लाइक्स रजिस्टर व्यूअर फ्लूएड। कुछ काम आ गया अभी। मैं अपना ही लाइव बना के छोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई ऑनलाइन है तो मुझे पता चले। लाइक्स रजिस्टर व्यूअर फ्लूएड। कुछ काम आ गया अभी। मैं अपना ही लाइव बना के छोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई ऑनलाइन है तो मुझे पता चले। लाइक्स रजिस्टर
ये ये कुछ काम आ गया अभी, मैं अपना ही लाइव लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई ऑनलाइन आए तो मेरे को पता चले। लाइक्स हैं मेरे हिस्ट्री, ये ये कुछ काम आ गया अभी, मैं अपना ही लाइव लगा के छोड़ देता हूँ। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। बढ़िया, कोई चेक कर रहा होगा ऐसे ही, मैं ऑनलाइन रहता तो हाँ वो। ओके, टेस्ट स्ट्रीम ड्यू डेट प्लेटफॉर्म। चलो, तुम फोन में पेज स्ट्रीम खोल लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना कोडिंग। और ये खुल चुका है क्या? इसको भी लॉन्च कर देते हैं जुपिटर लैपटॉप। चलो, तुम फोन में पेज स्ट्रीम खोल लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना कोडिंग। और ये खुल चुका है क्या? इसको भी लॉन्च कर देते हैं जुपिटर लैपटॉप। चलो, तुम फोन में पेज स्ट्रीम खोल लेता हूँ। यस, तो मैं पहले इसमें करा था जुपिटर लैब में, इसमें मैंने इम्पोर्ट से वी टू किया, सही में सब कैमरा में सब काम कर रहा था। जैसे ही इम्पोर्ट मीडिया पैक किया, इम्पोर्ट मीडिया पैक में सिस्टम में आया, मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन करूंगा। यहाँ पे मीडिया पैक है मेरे में, लाइब्रेरी सारे हैं मेरे में, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट कौन लिखा हुआ है। और इसको बहुत मैं कोशिश किया कि कुछ हो जाए, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। तो अफसोस के साथ ये मैंने जो भी लिखा है ये कारगर नहीं है। फिर मैं सोचा कि जुपिटर प्रोडक्ट से तो नहीं होगा, और इसको देखना पड़ेगा। और इसमें हाथ बैठा हुआ वीएस कोड है।
तो VS कोड से देखना पड़ेगा। तो मैंने VS कोड में बनाया है इसको, पाइथन का प्रोजेक्ट है माउस। इसका मैं चेंज कर देता हूँ। वर्चुअल माउस, वर्चुअल माउस। इसको हम खोल लेते हैं अपना VS कोड में शुरू कोड। तो इसको इसको मैं रन करके देखा, पूरा कोड को कॉपी पेस्ट करके, जहाँ पे मैं लिखने वाला था वहां से कॉपी पेस्ट करके दोनों फाइल बना के पूरा मैंने देखा। तो आराम से रन हो रहा था, मतलब कि सारे ये जो भी लाइब्रेरी है, ये भी लाइब्रेरी है, ये भी लाइब्रेरी है, ये सारे मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है। लेकिन ये सारे लाइब्रेरीज जुपिटर नोटबुक में नहीं दिखा रहे, शो नहीं कर रहा है। लेकिन VS कोड को सारे लाइब्रेरीज आराम से काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि जुपिटर को छोड़ो, हम लोग कोड अपना इसमें करेंगे। तो ये सब बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। बाकी ये अभी सब हटने वाला है, एक बार हम वापस लिखेंगे समझ समझ के। तो जैसे देखते हैं, ये अभी रन हो रहा है क्योंकि कैमरा तो अभी लाइव स्ट्रीम में बिजी है। तो शायद से ही रन होगा, इसको देखा जाए। अगर कैमरा काम शायद से करेगा। हम्म, बस ये monitor पड़ेगा। फिर से इसको हमें शो प्रेस फॉर डन कंटिन्यू और इसको रन करो। इसके लिए यहाँ पे विंडो खुलता है, कमांड फॉर्म टाइप का, जिसमें वेबकैम रहता है, तो वो काम कर रहे थे। नहीं, तो अभी कैमरा जो है मेरा लाइव स्ट्रीम में बिजी है, तो ये काम नहीं करेगा। तो काम करते तो हम लोग इसको नहीं देख सकते, मतलब वीडियो में तो आप देख सकते हैं जिसका वीडियो है, लेकिन हम ऐसे नहीं देख सकते वो काम करते हुए। तो चलो इसको हटा देते हैं पूरा। सेलेक्ट ऑल, डिलीट, then OS, util, platform, tribute, टूडेस। तो अपना बैंक हो गया, और इसको शुरू से लिखेंगे हम लोग, और जब से जुपिटर नाम को शुरू किया था वैसे ही देख के यूट्यूब प्लेलिस्ट The best part? You can train your own AI models to create unlimited professional ads featuring your face. Hello all, welcome back to Data Science Brain. In this video, we will be doing a fun project where we will be making a virtual mouse using hand gestures. So we will be using libraries like OpenCV, MediaPipe for computer vision for doing this. So for a demo, as you can see, when I am moving my hands, the cursor of the mouse is moving. So now तो एक्सपोर्ट से वो तो कर लिए थे, फिर टेस्ट frame by frame. नहीं। So we will say capture is equal to cv2 dot video capture. We need to capture the video of from our camera. We'll say video cv2 dot video capture, and here we will pass in the number that represents the camera that we want to capture. Okay, so we have multiple cameras. Your number could range from 0 to any number. Okay, so if you have two camera, it could be 1 here. So since I am only using my primary camera here, I will pass in 0 here. Okay, if you only have one camera, just pass in 0 there. And now we will put the next few codes in try catch block, so that if at all any error occurs, uh,
I mean, it won't end the code, okay, abruptly. Okay, so we will say while cap dot is open. So we are just checking if the capture is running successfully. If you are able to see the window, then we will return, we will get two things returned from cap dot read. So we are reading the video frame by frame here. Okay, so we are checking is the video open. Okay, then we are reading the video frame by frame here, and this will return two things: a return, which is a boolean value, and a frame. सबसे पहले अपन करेंगे import CV2 CV2 फंक्शन है जो कि ओपन CV अपना लाइब्रेरी का नाम है उसको अपन डाउनलोड करते हैं तो CV2 पे जाओ import CV2 then def main के अंदर आएगा cap is equals to CV2 dot video capture फिर अगर अपने पास एक कैमरा तो जीरो लगा देंगे फिर try while Okay, cap is open रिटर्न करेंगे frame is equals to cat dot read सबसे पहले अपन करेंगे import CV2 then def main के अंदर आएगा सबसे पहले अपन रहेगा CV2 CV2 important favorite my test even test name the role cap is equals to video cap share 0 CV2 dot manufacture CV2 dot video capture फिर if cap again like this try के अंदर आएगा and cap is opened by below if cap while cap is open while cap dot is open is open colon return comma frame is equals to cap dot return comma frame request cap dot read फिर read में अच्छा होता है तो एक ट्रैफिक हुआ शायद आगे बढ़ाने को हो सकता है so the return, this boolean value will be either true or false depending on whether we are successfully able to read the frame. Okay, if we are able to read the frame, this will be true. If you're not able to read the frame, it will be false. Okay, and this frame will contain the frame at this particular millisecond or something like that. Okay, so that's what कैमरा we are फ्लिप doing भी here. करता हूँ वर्टिकली Now फ्लिप we will करते हैं check कैमरा इसमें if, so we only need to do the next few steps if we are able to return this frame, right? Otherwise we won't be able to do it. So we'll check if not returned, the boolean is false. If you haven't gotten the frame, we'll just break out of the loop. Okay, because we won't be able to do anything else if we won't get the frame, right? And otherwise we will just say frame is equal to cv2 dot flip. So I will tell you why we are doing this. So we are just flipping the frame so that it will just look like we are looking in a mirror. Okay, so this is just for convenience. This will make क्या करते हैं सर्विस बोलते हैं एक सर्विस को होता है
और साथ ही साथ क्या होता है, बार बार क्यों हम उसको मिनिमाइज करें, और ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इतना ठीक है। फिर हेल्प के वाइल के नीचे नहीं, इफ रोटेट कर चाहिए, इफ नॉट अगर रिटर्न नहीं हुआ फिलहाल तो ब्रेक, अगर रिटर्न नहीं हुआ तो ब्रेक, नहीं तो फ्रेम इज फर्स्ट फुट स्विच टू डॉट फ्लिप क्या फ्लिप फ्रेम कॉमा वन, अगर ये हाँ, अगर ये वाइल कैप इस ओपन कैप्चर इस ओपन रिटर्न करेगा अपना फ्रेम, जो कि जो कैप्चर है उसको रीड करेंगे, ठीक है। फ्रेम जो अगर जो कैप्चर है जो खुला है उसको रीड करेंगे, अगर रिटर्न कुछ नहीं है तो फिर ब्रेक होगा, अगर रिटर्न हो गया तो फिर फ्रेम जो है वो CV2 डॉट फ्लिप कर, तो क्या होगा उसको फ्लिप कर देंगे। The video feed look like as if we are looking in a mirror. Okay, we are just mirroring the frame. Okay, that's all we are doing here, just for convenience. Okay, nothing important. And after that we will say cv2 dot, we will show the captured frame. Okay, we will use the imshow function from cv2 dot cv2 to show the frame that is captured. Okay, so we will name the window that is showing the video as frame, and we will pass in the frame that we have captured here into the function and ये capture. क्या Okay, क्या function होगा, from cv2 dot after that we will say cv2 dot, we will show the captured frame. Okay, we will use the imshow function from cv2 dot cv2 to show the frame that is captured. Okay, so we will name the window that is showing the video as frame, and we will pass in the frame that we have captured here into the function. And just like in the previous two videos, we will just say cv2 dot wait key. I will explain what this is doing in a minute. Wait key 1 and 0 x ff is equal to odd of q, we will break. Okay, 0xf क्या होता है, एक बार सर्च करके देखते हैं इसको, तो वो तो समझ आता है। 0xff means ये 64 में फैन होगा, what does one so we are basically telling that just wait for 1 millisecond after each frame is read, and if the keyboard input in this wait period is q, then break. So we are just के यहाँ क्या करेंगे, CV2 डॉट शो, अपना जब विंडो होगा इसका नाम रहेगा फ्रेम, जिसमें इनपुट किसका आएगा, फ्रेम का, और फिर इफ CV2 डॉट वेट की स्मॉल ब्रैकेट वन, वन का वेट रहेगा, एंड
0 times FF. No, what is equals to odd keyboard से input होगा Q का अच्छा होगा equals to Q का तो वो हो जाएगा break. Yes, I have watched him to the time show the frame with the logo on the frame और वो तो अपने का frame से फिर सेव इट और वेट कर देता है और जो हो जाएगा कीबोर्ड से हमको अगर क्यों आया तो मतलब क्लोज हो जाएगा ठीक है Just telling the system, telling OpenCV that if I have pressed ऊपर इस पर क्या पता रहता है कि जाना तो मैं फोन कर pressed Q when you are waiting for that 1 millisecond after each frame, if I have pressed Q, just break it. So we are just using this to close the window. Okay, just close the whole process of video capturing. Okay, that's all what's happening here. Okay, and odd Q will take the ASCII value for Q. Okay, that's all. And in after the try block, we will say finally. So after we have finished, we need to release all the captures and everything. We'll say release, and we'll say we will destroy all the windows that the OpenCV have created. Okay, destroy all windows. Okay, so these are the two things that we will do after the try block. Okay, फाइनली after we have run everything. So we will अच्छा तो also कैमरा write रिलीज क्या this किया here. If कैमरा रिलीज क्या we need to किया release all the capture block, we will say finally. So after we have finished, we need to release all the captures and everything. We'll say release, and we'll say we will destroy all the windows that the OpenCV have created. Okay, destroy all windows. Okay, so these are the two things that we will do after the try block. Okay, after we have run everything. So we will also write रिलीज क्या build it. किया We'll say release, and finally. So after we have finished, we need to release all the captures and everything. We'll say release, चल and तो we'll say कैप्चर को we will रिलीज करो destroy all the windows that the OpenCV have created. Okay, destroy all windows. Okay, so these are the two things that we will do after the try block. Okay, after we have run everything. So we will also write this here, if name equal to main. So we just, as I have explained in the previous two videos, we are just doing this to make sure that if you are importing this file to any other Python files, this function won't run. Okay, so it'll only run if you run this particular file. Okay, that's the only reason why we are doing this, and also for just to make it look better. Okay, so let us okay, we have encountered मैंने जो कैप्चर किए थे कैम डॉट सबको रिलीज कर दूंगा और सिर्फ तो मुझे वो बंदा था destroy all windows if name underscore name underscore is equals to underscore main underscore main main तो ये तो जो किया था इसका रिजल्ट बताए
ये हमें पूछे थे। the previous two videos. We are just doing this to make sure that if you are importing this file to any other Python files, this function won't run. Okay, so it will only run if you run this particular file. Okay, that's the only reason why we are doing this, and also for just to make it look better. Okay, so let us importing this file to any other Python files. This function won't run. Okay, so it will only run if you run this particular file. Okay, that's the only reason why we are doing this, and also for just to make it look better. Okay, so let us okay, we have encountered an issue. If cv2.wait key, oh okay, equal to the other one was an assignment. This is how we check. Okay, so after running the code, as you can see, we are successfully able to see the video. Okay, so we are getting the video frame, and so that part is over. Okay, so what are we going to do now? So we have captured the video. Now we need to detect the hands, right? Detect the fingers in the hands, isn't it? We need to detect the thumb, all these points, the tips of index and middle finger, the thumb, the distance between the thumb and the index finger, to detecting the folding effect and all. And also we need to detect this, right? We need to detect the angle. Only then we can know, whether or not we have folded the index finger. Same for the middle finger, right? So we need to do all of these things, right? So as we have seen in the previous video, there is a library called media pipe, and it has a module called hands module, which allow us to detect these points, isn't it? It will allow us to detect all these endpoints and all these landmarks, which we can use for the uh, for making the virtual mouse. Okay, so let's do that first. So let us import media pipe now. So let us now import media pipe. We'll say import media pipe as mb, not nb. Okay, mb media pipe. And as we have done in the previous video, we will just do some initializations. Okay, so we will say mb hands is equal to mb dot solutions dot hands, small letter hands, and we'll say hands is equal to, we will set up the model first, mb dot okay, sorry, mb hands dot hands, and here we will set up our model. Okay, so just like we have done in the previous video, I'll just copy and paste some of those to save the time. Okay, so we have just set the static image mode to false, so because we are capturing the video here. Okay, and also we will set the model complexity to 1 to get a better model, and also we will set the min detection confidence to 0.7, which means that the minimum confidence score required for a hand detection to be considered valid is 0.7. Okay, and also we will set the min tracking confidence to 0.7 as well. So we are saying that only if you are more than 70% confidence that this is a detected hand, then only continue to track that detected hand. Okay, and we will also say the maximum number of hands that you have to detect is 1. Okay, because just for making a virtual mouse we only need 1 hand, right? So that's why this. Okay, in the previous video we have used, in the previous project we have used 2 hands. Okay, and here we will be using 1. Okay, so we have set up the model. We have done the initial setup and all. We will also do this draw. We know that this will help us to, from the previous video you know that this is helping us to draw the landmarks and everything. Okay, so I will show you that this is helping us to draw the तो बेटर अच्छा import होगा via the yes mp. Okay, and it has universal mp dot solution
And this movie is equals to MP minus X. Stick image. No, because the first comma complexity is equals to 1. Given 10 is no 1 7 comma minimum tracking is equals to 7 7 comma max items equals to 1. Here we apply that into landscape now on media pipeline. Solution is also work on इनटेक कर रहे हैं ठीक है मीडिया का आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका वो इनटेक कर रहे हैं स्टैटिक इमेज जो है वो फॉर्चुनेबल के वीडियो में वाटर कंप्लेक्सिटी अपन होम यूज करेंगे मॉडल वन फॉर फॉर लिस्ट में मैंने वो डिटेक्शन परफॉर्मेंस होगा डिटेक्शन तब करेगा तब कॉन्फिडेंस इसकी 70% फोर अपनी ये हैंड ही है और ट्रैकिंग है तो भी करेगा 4.5 70% होगा केम हैंडलिंग और मैक्सिमम हैंड जो है वो वन यूज करेंगे ठीक Okay, so we have set up the model. We have done the initial setup and all. है We will अच्छा लगे also बताओ do this draw. We know that this will help us to, from the previous video, you know that this is help. अच्छा और डेफ मेल के अंदर हम क्या करना चाहिए करेंगे draw heroes solutions drawing duties draw drawing duties Helping us to draw the landmarks and everything. Okay, so I will show you how this media pipe library looks. So you can see the media pipes hand module allows us to detect all the landmarks in a hand. Okay, so they will help us detect 21 landmarks in a hand. Okay, all the I mean knuckle and all the so rated function
points and everything. Okay, the tip of the finger. आज इतने करते हैं 10 मिनट देखते हैं बहुत है 10 मिनट ही देखते हैं इसमें तो अभी देखते हैं चलो इसको तो सेव बस कॉपीराइट ना आएगा और भी चैनल वाला कॉपीराइट भी आऊंगा बहुत चार्ज भी आऊंगा क्या देखूंगा चलो ये देखो चलो इसको देखता हूँ Next year, that'll be me. My immediate अच्छा reaction ये वीडियो जो है ये एक बार आ चुका है और मैं इस पे दोबारा सर्च किया तो ये हट गया वीडियो था ही नहीं बहुत सर्च किया मैं इसको बहुत सर्च किया वीडियो था ही नहीं अभी वापस से रीअपलोड हुआ है वैसे पता नहीं to seeing such a silly device as this Light Phone 3 is to first suggest that perhaps technology is evolving backwards. However, after some brief contemplation, I've come to the tentative conclusion that perhaps, in order for humanity to go forwards, we have to go. अच्छा ये है क्या the newest smartphone more ways than one That perhaps, super in better order like for humanity phone alarm directions calendar mode settings to go forwards, we have to go backwards. Especially if you're the type of person who can't be without your phone for more than 5 minutes. Are you talking about yourself? No, I'm talking to them. Right. The average person checks their phone 80 times per day. I think you are talking to yourself. No, thank you. I am very much above एक average. डब्बा के साथ कैसे स्ट्रेस करता है ये बैक पर खुला नहीं है ये बस डब्बा से निकाला है No, I'm talking to them. Right. The average person checks their phone 80 डब्बा से times बाहर per निकाला day. I think you are और talking ये to yourself. No, thank you. I am very much स्क्रैच above average. अरे Exactly. बाप रे Wait, you have a problem. I can quit whenever I want. Wanting to reduce the amount of time staring at a screen is, of course, a very healthy desire. What's unhealthy, though, is that this thing costs $599, a price at which I don't think I can afford to get my dopamine back. The iPhone 3 is designed, of course, to be used as little as possible, and a black and white AMOLED screen is the ये first कितने step, का of course, to be used as little as possible. I can afford to get my dopamine. $599, a price at which I don't think I 500 बस 6 अरे कैलकुलेट कर लेते हैं ना छोड़ रहा है इसमें $600 into रेट का चल रहा है 86 पे चल रहा है 51,600 can afford to get my dopamine back. The iPhone 3 is designed, of course, to be used as little as possible, and a black and white AMOLED screen is the first step of that technological detoxification. Yeah, it can make calls, send texts, navigate with GPS, download podcasts and music on its 128 gigs of internal storage space, and it also has a calendar. And this time around, it does have a color camera, which we'll dive into more in a second. Right out of the box, it feels like a solid little unit. The 3.9-inch matte display adds a premium vibe to it, even with everything being so minimalistic.
The matte glass also makes it harder for us to get an accurate reading on the Mohs scale of hardness, since instead of my picks doing the scratching, the screen is acting like a level 6 ultrafine sandpaper to the tips, leaving trails of mineral dust below each number on the scale. Since we know it is glass though, and for old time's sake, we can just say it scratches at a level 6 with deeper grooves at a level 7. There is a small circle of clear glass above the 8 megapixel front-facing selfie camera. There's also some fine तो इसका स्क्रीन वो है यहाँ से दिख रहा है, small सीधा इसका circle of स्क्रीन clear दिख रहा है, glass above the 8 megapixel front-facing इसका स्क्रीन यहाँ से दिख रहा है, ये इसका स्टोर यहाँ से बेजल है थोड़ा बहुत इसमें selfie camera. There's also होता है, some fine metal mesh inside of the top stereo speaker earpiece slit. This won't be falling out on its own. Making our way over to the black frame rails, we नीचे find से भी इसका इतना बेजल है, ये भी दिख रहा है, our first attempt at justifying the exorbitant $600 price tag. Aluminum. There is a dedicated camera button over here for the rear 12 megapixel camera. It's kind of cool that it can kick the camera on, but then there's a delay of about 3 eternities between the time the button is pressed and the time the picture gets taken. It's also interesting that the circular metal volume buttons are spaced out with a menu button between them. Interesting strategy, something we've never seen before. The top of the Lightphone 3 has more aluminum with a 5G antenna line. The 5G is for the GPS navigation, I guess, and for sending text messages lickety-split. There's also a fingerprint scanner on the top power button. The right side has some more metal with a circular wheel that adjusts the screen brightness. And if you press it, the rear flash also activates as a flashlight. The bottom of the phone has a USB-C 2.0 for transferring music, podcasts, pictures, and हेडफोन fast देखो, charging. हेडफोन देख नहीं, The gigantic grille below the screen is for the lower stereo loudspeaker. Kinda gives me old school HTC vibes. I mean, like, I get the point of the phone, right? The owners of this company want us to go out and open our front door and squint our eyes up at that bright ball in the sky, the sun, and feel those little plants beneath our feet, the grass. But I'm not entirely on board with that mission just yet. There are, however, some screws on this back panel which apparently lead to a user-replaceable battery, which is a mission I'm totally on board with. With the 4 T4 screws gone and the plastic battery door removed, I can see the battery, but there are a few extra steps, like another screw over a metal bracket holding in the Lego-style साइड और दिस वन इज के ब्रेकिंग इनटू be careful. connector, and interestingly enough, 2 magic pull tabs. Thumbs up for that. We'll have to come back to these though, since I don't want to do anything just yet that would compromise the rest of the durability test, so I'll put the sun back where it belongs. For some reason, the top half of the phone is not scratching though, and I'm not sure why. The 12 megapixel camera, however, does have a circular scratch-resistant camera lens. I'll snag some pictures so we can assess the camera quality. And I mean, it's not totally terrible. Safe enough to preserve family memories and document your daily life. You can't share the pictures to social media though, which is kind of the whole point of the phone. When it comes to video, the Lightphone 3 caps out at 1080p and has some real 2007 flip phone quality vibes to it. दोस्तों अगर आपको 25,000 के सेगमेंट में अमेजिंग और यूनिक फीचर्स चाहिए तो दिस फोन ये फोन अच्छा है, अगर इसमें बहुत अच्छा फोन, अगर इसमें कलर जो है 21 से तो बुरा नहीं है उसमें, बस कलर उसका थोड़ा ब्लैक है, वाइट वगैरह चाहिए, वॉल वगैरह स्ट्रॉन्ग कलर भी होना चाहिए, और इसको तो ग्लास नहीं पसंद है, उसका रेड मोड लाना चाहिए. This is what the video quality looks like with the Lightphone 3, as well as the audio from the video. Shaking my hand a little bit. We'll find out if it has optical image stabilization here in a minute. With the screen being matte on the surface and AMOLED under the glass, it kind of mutes the colors from the camera while you're taking pictures or videos, but then they appear more normal when offloading onto a computer and viewed on a normal non-matte display. If we light the Lightphone on fire, it lasts for about 25 seconds before the minorest of blemishes appears, but then still continues to work just fine. Now, I would be amiss here if I didn't mention that one of the methods Lightphone is using to help decrease our attachment to technology is eliminating color. But both Androids and iPhones have that same grayscale capability already built into the operating systems. But nobody ever mentions it since most people aren't strong enough to turn it on. In theory, social media becomes less enticing to our feeble human brains when colors and filters are removed. Now, it was about here that I noticed that at some point between my scratch test and now, the Lightphone 3 grew a new crack across the display. Most likely due to my level 7 Mohs pick. Definitely my bad on that one.
but at least now we have a second confirmation of it being real glass. When it comes time for the bin test, thanks to this LifePhone 3 being basically a small hunk of metal, it holds up much better than the plastic e-ink LifePhone 2 from 4 years ago. However, also thanks to that chip from my level 7 Mo's pick, the rest of the screen does shatter below that line. Aside from Yeah. that though, the phone is still super solid and still fully functional. If I hadn't chipped the glass first, it probably would have been just fine. स्क्रैच से I do hear those थोड़ा magic pull tabs calling my name though. With the lower plastic back panel gone again and the metal bracket over the battery connector removed, I can get the battery unplugged. I'll slide away the warranty void sticker, these stickers aren't valid in the USA by the way, and we can get to pulling those little pull tabs. They are tiny, yet mighty. There are probably easier ways to install non-permanent batteries, but pull tabs are the cheapest. And would you look at that, they even left a hidden message for us. Much love, Light. Something nobody would ever see unless they change out their 1800 milliamp hour battery or they're subscribed here to my channel. Interesting. Getting a little too mushy in here for my taste though, so let's continue onward. There is a water damage indicator sticker inside the battery compartment. This turns from white to red when it gets wet to tattle on you. The LifePhone is IP54 water resistant, meaning it can handle small splashes or a few raindrops, but nothing else. Now, it's about here that I made a mistake. फोन का टोटल वाटर रेजिस्टेंस बन सकता है लाइफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो बन सकता है फीचर ही क्या है इसमें तो मैं कुछ And see if you can catch what it is. Yeah, for some reason it didn't cross my mind that the upper portion could have been glass. How long have you been doing this? Look, bud, glass is glass. With the back glass now gone, we can see that the 12 megapixel camera does appear to have OIS. So I imagine that the camera quality and stabilization will improve over time with software updates. I'll lift up the NFC coil, and then, interestingly enough, after the single SIM card tray gets removed, I can pry out the plastic midframe from the aluminum housing. The only thing really designed to be semi-easy to replace in here is the battery and the screen, which are the most common repairs, so that is a good thing. The single front-facing 8 megapixel camera can unclip like a little Lego. It's a very tiny guy, with no OIS. The giant lower loudspeaker has a few more of those T4 screws, and then it can lift away. There's a small vent at the right side, but there are no balls inside. The chamber is large enough, though, that it probably doesn't need them. The motherboard has 4 T4 screws of its own, and 3 more Phillips head screws over by the rear camera unit. Then the motherboard can lift out and away from the phone, leaving behind the upper stereo speaker and quite a bit of thermal paste, because you know that alarm clock is putting those CPU cores to work. The USB-C port is modular and replaceable, but unfortunately the screen's ribbon cable is only able to be connected and disconnected from the front side of the motherboard. There's no way to reattach the screen to the motherboard now that the main board has been removed, which again is my bad. Now I'll have to get a replacement screen anyway and install it from the front, because there's no way my current screen will survive the removal process. Just for the record, I could do this way better next time, which is probably the last thing you want to hear your surgeon saying, but it's true. We gotta learn somewhere, right? To be fair, the phone is still working, and I can feel the vibrator kicking on. It's just the screen that is still unplugged, leaving the pixels dark. If you are gonna go spend $600 on this thing, you might as well at least shell out a few more bucks for my teardown skin, which D-Brend and I have now available for pretty much every mainstream smartphone, laptop, and tablet. I also got a monochrome X-ray version if that's more your vibe. Do it for the dopamine. Thanks a ton for watching. I'll see you around. ठीक है Next year, that'll be me. I will never be ordinary. Welcome to my YouTube channel. Hi. Hi. Tell me all the parts we do. We gotta see where it scratches. Ah. So many scratches on there.
My immediate ये देखते हैं सर्विस में। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। पहली बार बैठे हैं भाई आज BE9, सॉरी भाई XE सॉरी भाई यार, सब कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तक इसके सॉरी नाम में। भाई, सॉरी यार। तो भाई ये अलग ही लेवल चीज़ है। ये दिवेश भाई ने आज हमको मौका दे ही दिया भाई इसको चलाने का। भाई ये देखा आपने वो जो भाई हैं मुंबई का निखिल वगैरह कैसे बुराई कर रहे हैं गाड़ी की कि यार इसमें ये दिक्कत है, कोई रिव्यूअर ये बता ही नहीं रहा, ये कमी है वो कमी है, और वो ज़्यादा ही लपेट रहे हैं गाड़ी की। इसको ऐसी दिक्कत है क्या रियलिटी में? भाई मैंने अभी उनकी वीडियो देखी नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, पर मेरे को तो कोई लगी कह नहीं। रहे थे कि मैं जैसे उन्होंने भी गाड़ी परचेज करी, कह रहे कि XEV9E में इतनी सारी दिक्कतें हैं, कोई भाई बताता ही नहीं है, केवल बस जो ब्रोशर है उसको पढ़ के फीचर्स बता देते हैं। तो क्या दिक्कत बताया, कुछ बताया नहीं उन्होंने? किन्होंने? मतलब मैंने भी इतना नहीं देखा डिटेल में, एक रील चलती फिरती आई थी, मैंने भी वही देखा। मैंने एक रील देखी उनकी, उसमें ये बोल रहे थे वो बैठ के कि भाई मेरे पे Q7 थी, उनके पास Q7 थी। वो ये कहते कि उसका सस्पेंशन जैसा था ना, उससे बढ़िया सस्पेंशन है इसका। रियल वो भाई देख लो ना, अब हम यहाँ कितने खराब रोड पे हैं भाई। इन्होंने अडेप्टिव ये सब कुछ डाला है ना इसके अंदर कि अपने आप अडेप्ट हो जाएगा। क्या क्या करके मानेंगे यार ये इन्होंने, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं गाड़ी के अंदर भाई कि सही यार, देखो देखो ये यहाँ पे अपना ड्राइवर की, ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों देख सकते हैं, और ये खाली पैसेंजर है। क्या सही है सिस्टम, कितना बढ़िया है। स्मूथ है भाई सारा सिस्टम, कितना मजा ज्यादा आता है स्मूथ है भाई। मतलब स्टीयरिंग देखो आप, एकदम आपको ऐसे लगेगा। हालांकि इसमें ये दिक्कत है भाई, हॉर्न बजता है ना अगर आपको बटन दबाने हैं तो। नहीं, वो आदत की बात है। जैसे यहाँ पे ये भी हैप्टिक है, वो भी हैप्टिक है। देखो मैं दबाऊंगा तो नहीं बजेगा, अब दबाओ तो बजेगा। अच्छा, तो ये भी हैप्टिक टच बताओ यार, कमाल ही कर दिया। और कैमरा वैमरा इतना क्लियर है भाई, ये IPL देखने वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे भाई। तो ये ये प्रैक्टिकल चलता रहेगा आपका, मतलब ये प्रैक्टिकल है। ये ड्राइवर के हिसाब से नहीं है, पर हाँ इसके जो यहाँ बैठा उसके हिसाब से तो बढ़िया ही है। तो भाई अब देखना जरा, टेस्ट मार के देखते हैं। ये हमारे पास टॉप मॉडल है, 79 किलोवाट का बैटरी पैक है इसके अंदर। ये भाई 282 bhp निकाल के देता है, जो कि बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पावर हो जाती है भाई। तो पहले सीट बेल्ट लगाते हैं भाई। उड़ती है क्या गाड़ी इतनी तगड़ी? बहुत ज्यादा शैम्पू भाई, ऐसा ही है क्या इसका? बहुत ज्यादा भाई। ये शुरुआत में उठती तो प्यार से है, पर जैसे ये 20 की स्पीड पकड़ेगी उसके बाद ऐसे जाती है। मतलब ये एकदम झटका नहीं देगी शुरुआत में, ये अच्छी बात लगती है मुझे इसके अंदर। तो ऐसा डी पे डाला मैंने ये। तो अब देखे जरा ट्राई मार के, ये अभी नॉर्मल मोड पे है ये। अभी ये डिफॉल्ट मोड पे। अच्छा, 28% चार्ज है। और भाई इसमें भाई एक तो इतनी स्मूथ होती है ना यार, ये पता ही नहीं चलता गाड़ी ऑन है ऑफ है। और ये कितना तगड़ा लगता है इसका ये हेड्स अप डिस्प्ले। ये वो है ना AR वाला, इसमें वो एरो वेरो बन के आती है। ऐसे लग रहा है रोड पे किसी ने भाई स्पीड रख दी हो हमारे लिए। वो भी है, साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन वगैरह आसपास होता तो वहीं बता देता है सामने है। चार्जिंग स्टेशन कहीं है तो यहीं सामने दिखा देगा, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, आपको जाना तो कर लो चार्ज। यार अगर मेरे को जरूरत भी नहीं है तो तब भी बताते रहते, छोटा सा आ जाता है आइकन, हल्का सा बना हुआ, जैसे ये आ जाए उसके साइड में छोटा सा। यार इन्होंने ये रेंज एंजाइटी के लिए बहुत तगड़ी चीज निकाली है वैसे। अगर डीपली सोचो और ना, उसमें ऐसे भी आता है कि 50 मीटर बचा है, 350 मीटर बचा है, और जैसे आप चलोगे कम होता रहेगा, लाइव चलता है सब कुछ भाई साहब। मतलब गाड़ी कितनी स्मूथ, और ये देखने में लग रही है महिंद्रा नीची गाड़ी। हार्डवेयर जो है, मतलब ये समझो ना, ये तो पहले से काम हुआ था। ऐसा स्कॉर्पियो में भी और पर्सनल ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर में बहुत इम्प्रूव किया। ये सब ये 3 डिस्प्ले चलाना और तीनों को स्मूथली चलाना, ये तो अपना प्राइमरी चलते रहेगा। ये एक्टिव होना चाहिए हमेशा, और रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ये तो हमेशा चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। और तीनों साथ में से सिर्फ तो इसके लिए प्रोसेसर भाई, क्वालकॉम की प्रोसेसर भाई बहुत सही है। और प्रोसेसर चाहिए भी, ये बहुत अ, क्या बोले थे उसको, हैवी टास्क है ये सब, एक कार्यक्रम, मतलब कंप्यूटर ही समझ में आता है। ये ऊपर बैठते तो SUV वाली सी फील आ रही है इसके अंदर। तो एकदम SUV वाली। देखो गांव के भाई बालक इकट्ठे इसको देखने हुए, इनको पता चल गया कि मार्केट में XEV9 आ गई। ये लंबी बहुत है वीडियोस में और उसमें फोटोज में लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन दिस इज टू ह्यूज व्हीकल भाई। लेंथ हो गई इसकी, ब्रेड्थ विड्थ, और कितना खुला खुला हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं एकदम खुला खुला सा महसूस आपको होता है। ये इन्होंने हालांकि XUV700 की सी ऐसे लगता है कि यहाँ से पूरा जो थीम है XUV700 वाली आ गई है, लेकिन बहुत ही प्यारी चीज है भाई। अच्छा, सिंगल पेडल ड्राइव इसका प्रैक्टिकल है भाई? जो सिंगल सिटी में आदत की बात है, एक बार आदत में आ जाए तो प्रैक्टिकल है। शुरुआत में जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाया था तो मेरे को अजीब लगा था भाई। देखना कितनी प्यारी फील आती है भाई इंटीरियर में बैठते ही भाई। देखो पूरे में ग्लो व्लो सा करने लग जाता है। अच्छा, इतनी गाड़ी में इन्होंने सारे फीचर्स तो दे दिए, बस एक चीज छोड़ दी भाई। एक चीज की मिसिंग आपको जरूर से देखने को मिलेगी भाई गाड़ी के अंदर, लाइट्स वाइट्स की नहीं कह रहा।
भाई में एसओएस बटन भाई पूरे भाई। एक अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आपको गाड़ी में चाहिए ना भाई, तो इतनी प्यारी गाड़ी में इनका वाला भी मंगवा सकते हो। मतलब जो रहता है ना एकदम परफेक्ट, जिससे कहते हैं स्टीयरिंग, जिस किसी गाड़ी का आप अगर बोल सकते हो, तो ये उनमें से है भाई। 19 इंच के अलॉय व्हील लगा रखे हैं और स्पीड कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ये मेरे हेडसअप डिस्प्ले के साथ मैंने आज तक गाड़ियां ना ऑन करी ना चलाई हैं। ये बहुत तगड़ी सी लगती है भाई। कैमरे में जो आपको ये दिख रही है ना, ये आप नहीं देख सकते, जो ग्लास पे ऐसे लगता है सामने ही है। मेरे को सच बताऊं, मेरे को थोड़ा सिर दर्द सा करने लग गई। थोड़ी देर शुरुआत में आदत नहीं रहती, मेरे भी हुआ था वो, उसके बाद अब मुझे आदत में आ गया, तो मुझे नॉर्मल लगता है। मतलब रहता है ना, फोकस हमारा वहाँ चला जाता है ना, उसको अजीब सा हो जाता है। 3D और ये किसी और को नहीं दिखेगा ना, आपको दिख रहा होगा ना इनको दिखेगा। ये वैसा ही है कि जब मॉल में 3D मूवी देखते हैं, तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। ये कहने वाला था कि वो चश्मे से लगा लेंगे तो ठीक लगेगा, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं क्यों हेडेक सा दे रहा है ये। अच्छा पीछे भाई कंफर्ट कैसा है भाई? और सबने सीट बेल्ट लगा रखी है, देखा सबको आदत डलवा दी थी सेफ रहने के लिए। मतलब कम 5 बंदे ट्रेवल कर सकते हैं इसमें। तुम तीनों पक्का ऐसा तो नहीं बोल रहे भाई कि चलें ट्रिप पे? फिर अभी मार दे सीधा, यहीं से चलते हैं। चलें गुजरात। चलो भाई। और अब तो चार्ज बीच बीच में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए, अब तो हर जगह है। इससे गोवा और लद्दाख करने की सोच रहे हैं। लद्दाख तो अभी हम अप्रैल में सोच रहे हैं इससे, और फिर एक गोवा का ट्रिप करेंगे और फिर एक इंडिया टूर करेंगे इससे। अच्छा, 3 ट्रिप प्लान कर रखे हैं इस साल करने हैं हमको बड़े बड़े। भाई देखो हर किसी की नजर ऐसे टिक जाती है, क्योंकि अभी रोड पे ही नहीं दिखेगी भाई गाड़ी कहीं पे भी आपको ना। और आईपीएल वाली चीज तो बहुत तगड़ी है। अच्छा देवेश भाई, अब मान लो देखो उसमें भी यूट्यूब चलता है, इसमें भी, अब इसमें भी चलाना है एक बार। अगर मान लो मैं इसमें भी चला दूं, इसमें अगर हम जैसे कुछ भी गाने वाने चलाते हैं तो आवाज कहाँ से आएगी? वो बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते? नहीं, दोनों एक साथ नहीं, साउंड एक ही का आएगा, एक पॉज हो जाएगा दूसरा। लेकिन ये तो भाई फिर बहस भी करा देगी, ये तो लड़ाई भी करा देगी साइड वाले के बीच में। अगर मान लो ड्राइवर को भी चीज देखनी है, वो हालांकि देखनी नहीं चाहिए, तो उसको दूर देखना पड़ेगा ना। नहीं, ड्राइवर को तो देखनी नहीं चाहिए, आपने बताई, पर जब ड्राइवर को देखनी है ना, तो आप बता रहे हो, तो एक तो ना सेम चीज देखनी पड़ेगी। यही सेम चीज तीनों स्क्रीन पे आ जाती है, यहाँ भी चलेगी, वहाँ भी चलेगी, वहाँ भी चलेगी। और पीछे जैसे आप भाई के पास मोबाइल है, वो सीट में लग जाता है, सीट में एक वो दे रखा होल्डर, तो उस मोबाइल के अंदर भी सेम चलेगी। मतलब सारे लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे सेम चीज देख रहे होंगे पूरे। जैसे 3D साउंड नहीं होता, मूवी में बैठ के देख रहे हैं सब, अपने अपने मूवी देख रहे हैं, वैसे वाला साउंड रहेगा। इसके बहुत सही है करना भाई एक बारी ये। अच्छा, इसमें आदत पड़ने वाली चीजें है ना, नए बंदे पे बहुत सलनी पड़ेगी इसके अंदर। तो इस 3 स्क्रीन कैसे करेंगे भाई इसके अंदर? तीनों में एक चीज अगर चलाना चाहिए, जब गाड़ी खड़ी है, चार्ज हो रही है या फिर नॉर्मल खड़ी है, उस टाइम पे कर सकते हैं। खड़ी में ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही तो मैं कह रहा था, ये चीज चली जाएगी अगर स्पीड वाली एडेप्टिव वे भी इसमें एडास वगैरह के फीचर्स हैं। बाकी जैसे एक दो चीजें जैसे एंड्रॉइड ऑटो हम इसमें चलाते हैं, ठीक है, इसको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ भी गूगल मैप आ जाता है। नहीं तो नॉर्मल मैंने देखा था नेविगेशन इसमें आ गई थी। हाँ, नेविगेशन तो नॉर्मल आ जाती है, इसमें गूगल मैप आता है। गूगल मैप बहुत कम गाड़ियों का यहाँ का वहाँ पहुँचता है। हाँ बिल्कुल, पूरा वो भी नेविगेशन, पूरा मैप 3D पूरा तगड़ा। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, एक उनको वहाँ पे ऑक्स पोर्ट दे देना चाहिए था 3.5mm जैक का, लगा के अपना देखो। ईयरफोन लगा के वो बंदा अपना अलग देख ले, और ये जो ड्राइवर है अपना अलग इंजॉय और म्यूजिक वो करता रहे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एक चीज हो सकती। तो क्या इन्होंने 2 सिम डाली है क्या? क्योंकि एक सिम से 2 अगर मान लो, एक ही सिम है इसमें। और अभी मुझे कंपनी नहीं पता चली, मुझे लगता है वोडाफोन ही है वैसे, क्योंकि ज्यादा गाड़ियों में वोडाफोन ही आती है। तो इसमें पर 5G चल रहा है, तो हो सकता है नहीं वोडाफोन अगर हमारे गांव में है ही नहीं। हाँ, तो पता नहीं इसमें कौन सी सिम है, पर एक ही है। पर अब जैसे नॉर्मल मोड में चल रही है गाड़ी, अब भाई मेन ड्राइविंग खींचते हैं यार भाई क्या ही है आजकल की पेट्रोल डीजल, जो पावर इतना टॉर्क, इतना कौन बराबरी ले लेगी इसकी? कोई ड्रैग रेस में भाई कोई आके दिखा दो, कोई भी भाई। तुम 1.5 करोड़ की गाड़ी नहीं हरा सकती इसे। तुम ला के दिखा दो, तुम डिफेंडर छोड़ो, तुम कोई परफॉर्मेंस BMW के M स्पोर्ट ले आओ, कोई हरा ही नहीं सकती। 282 bhp भाई, पंजा दबाओ। और ये देखो, ये तो हम नॉर्मल मोड में, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल मोड में तारीफ कर रहा हूँ, वो बूस्ट मोड यहाँ से लगता है इसका। भारी लग रहा है, लेकिन इंट्रागोल्ड के शानदार इंजन के लिए ये कुछ ये यहाँ से ये वाला बटन, वो बटन दबा, अगर किसी को मतलब आपको ओवरटेक करना है, कोई साइड से आपको ओवरटेक करके एकदम पंच मार के चला गया, तो ये बूस्ट मोड लगेगा भाई एकदम से यहाँ पे, और गाड़ी फिर तो पागल बन जाती है, पागल ही हो जाती है भाई। और यहाँ पे देखो भाई, स्टे फोकस्ड, योर अटेंशन रोड बिलोंग्स ऑन द रोड। ये जो कैमरा आपको देख रहा है कि आप इधर उधर देख रहे हो, तो वो बता रहा है आपको। अच्छा जी, ये 24 घंटे देखता रहता है क्या? ड्राइवर को, ड्राइवर ये भी दिखा देता है थोड़ी देर में कि आप अपना गैजेट नीचे रख दो। सच में दिखा रहा है जब आप कर रहे हो। फोन का भी बता देता है कि गैजेट नीचे रख दो अपना। भाई जो AI है ना, ये खतरनाक सही है, बहुत सही है। चलो ये स्ट्रीम कितना ही रखता है, और मिलता है जब भी अगली बार को टाइम मिलेगा तब। हम लोग 10 मिनट देखना है, इसके बाद का वो कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट को। तो गुड नाइट।